Hey everyone, I welcome you on my channel Let's Speak, where I teach you English speaking easily and confidently. This class is gonna to be about something new. आज की इस क्लास में आप सीखने वाले हो what is countable and uncountable noun in a very simple manner. Okay, so we are going to do one exercise and based on this exercise is based on countable and uncountable noun, and I hope after watching this complete video you will have a good knowledge about what is countable and what is uncountable. So you can have just quick read of the question. Okay, the question to the following exercise on countable and uncountable noun, and you have to choose your answers. C for countable and U for uncountable noun. Got it? So let's start this class today. Please do subscribe my channel if you have not subscribed it. Okay, so let's start with the question 1. The children are playing in the garden. First we need to identify what is noun in this sentence, children. So can you count children? Yes, children are countable. That means it is countable noun. Okay, so countable nouns is a noun which can be counted, right? Second is I don't like milk. So here noun is milk. Can you count milk? No, it is uncountable noun. Okay. Next is I prefer tea. Tea is what, guys? Uncountable. You can write U. Scientists say that the environment is threatened by pollution. So here scientists are what? They are countable, right? So my mother uses butter to prepare cakes. My mother is countable because you can count the person or people, and cake is also countable. So this is countable noun. Okay. Sixth one is there are a lot of windows in our classroom. So windows are what, guys? Windows are countable noun. Next is seventh. We need some glue to fix this vase. यहाँ पे वेज इज वॉट? वेज इज काउंटेबल नाउन एंड ग्लू इज वॉट, गाइज? ग्लू इज अनकाउंटेबल. द वेटर्स इन दिस रेस्टोरेंट आर वेरी प्रोफेशनल. तो रेस्टोरेंट इज वॉट? काउंटेबल, एंड वेटर्स आर ऑल्सो काउंटेबल. माई फादर ड्रिंक्स 2 बिग ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी मॉर्निंग. तो वाटर इज वॉट? वाटर इज अनकाउंटेबल. ओके, वाटर इज अनकाउंटेबल एंड my father is a countable noun, or my father is proper common noun, right? Because father can be any. Next is the bread. Bread is what, guys? The bread is what? Bread is uncountable noun. Okay, my mother prepares is delicious. Delicious क्या है? Delicious हो जाएगा हमारा adjective, है ना? Adjective हो जाएगा. वैसे ही 11th जो है ड्राइवर्स मस्ट बी केयरफुल. तो ड्राइवर्स क्या है हमारे? ड्राइवर्स, द रोड इज स्लिपरी. तो रोड क्या हो जाएगी हमारी? कॉमन नाउन हो जाएगी, और ड्राइवर हो जाएंगे हमारे काउंटेबल, है ना? सम पुलिसमैन आर ऑर्गेनाइजिंग रोड ट्रैफिक टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट. तो एक्सीडेंट तो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा. पुलिसमैन क्या हो जाएंगे? काउंटेबल. आई बॉट 3 बॉटल्स. तो बॉटल्स क्या? काउंटेबल नाउन. मिनरल वाटर क्या हो जाए? अनकाउंटेबल नाउन फॉर अवर पिकनिक. आईड लव सम जूसेस प्लीज. तो यहाँ पे जूस क्या हो जाएगा दोस्तों? जूस हमारा वो है जो है, क्या हो जाएगा? जूस. जूस है, जूस क्या है? अनकाउंटेबल है ना? वैसे ही 15th वाला जो है सेंटेंस, 15th सक्सेसफुल कैंडिडेट्स. तो कैंडिडेट्स काउंटेबल है. विल ज्वाइन द कैंप लेटर दिस ईयर. सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो इस साल बाद में कैंप ज्वाइन करेंगे. अ रेज इन ऑयल प्राइजेस. ऑयल प्राइजेस क्या है? ऑयल प्राइजेस. ऑयल अनकाउंटेबल. इज एविटेबल इनएविटेबल सिंस देयर इज मोर एंड मोर वर्ल्ड डिमांड फॉर एनर्जी. The exercises on this website are interesting. Exercises क्या है? काउंटेबल है. Dehydrated babies must drink a lot of water. Water uncountable है. Adult illiterates learn through a special government program. तो
इलिटरेट्स क्या हो जाएगा, काउंटेबल, इलिटरेट पीपल जो अनपढ़ लोग होते हैं। आई मेट सम नाइस पीपल व्हेन आई वाज वॉकिंग अलोंग द बीच, तो पीपल क्या है, काउंटेबल है। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में सीखा कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। दोस्तों एक्चुअली आई हैव परचेस्ड दिस पेन टैबलेट टुडे ओनली, सो that's why I don't have this much clarity in writing part. Stay with me till the next video. Thank you so much for watching. Share with your near and dear ones too.